Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Mannan Majid and students. This is our third lecture, which is according to the scheme of course outline of our classical mechanics. In this lecture, we will discuss variation principle, or we can say that in this equation, we deal with the integral system. How we will deal with this, you will see in the later on in this lecture. In the previous lectures, we have discussed the Newtonian mechanics, the basic laws of motions, and the second lecture we have discussed the Legendre transformation. We have derived Lagrangian equation by using D'Alembert principles and also see some examples. The Legendre equation, or we can say the Lagrangian equation of motion, derived from the D'Alembert principle, which is based on virtual displacement. In that lecture, we derive Lagrangian equation from the D'Alembert principle, which is the differential form of the Lagrangian equation. Here, in this chapter, we will discuss basic laws of mechanics from integral principle known as a Hamiltonian variation principle. First of all, we will see what is Hamiltonian's principle. According to the definition, for a conservative holonomic system, the motion of the system from its position at time t1 to its position at time t2 follows a path for which line integral is L q1 q2 q3 and q1 dot q2 dot on qn dot t delta t has a stationary value. इस अगर आसान अल्फाज में समझना चाहें इस डेफिनेशन को, तो according to this definition, if we have to move in a plane xy from the position t1 to t2, we have number of ways to move from t1 to t2. T1 से T2 पे मूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, या डिफरेंट पाथ से हम T1 पोजीशन से T2 तक मूव कर सकते हैं. बट हैमिल्टनियन प्रिंसिपल कहते हैं कि डिफरेंट जो आपका पाथ होंगे या डिफरेंट चीज़ें होंगी जिसके थ्रू आप T1 से T2 मूव कर जाएंगे, वो पाथ एक एग्जैक्ट पाथ होगा, एक सही पाथ होगा, बाकी सारे पाथ को हम कंसीडर नहीं करते. सिर्फ एक पाथ उनमें सही होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं. एक और चीज इसके अंदर, इसे हम हॉलोनोमिक सिस्टम कंसीडर करते हैं, where L is the Lagrangian and Q dots are the generalized coordinates of the system. The integral between T1 to T2 के जिस पाथ में मूव करना है उसका इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट को,
दिखाया गया. Mathematically, it can be written as delta I is equal to delta T1 T2 L Q dot T L dt equal to 0. जैसे कि हम पहले डेफिनेशन में देख के आए हैं कि लास्ट लाइन अगर हम देखें तो इसमें मेंशन क्लियरली मेंशन है कि ये हैज अ स्टेशनरी वैल्यू. स्टेशनरी वैल्यू के मीन्स इट हैज अ fixed value. So by taking some variation or by taking some change in I should be equal to 0. Or we can say that change in generalized coordinates, generalized position coordinates with T1, T2, 2 is also equal to 0. So delta variation consider here refer to the variation inequality at same instant of time. कि जो डेल्टा है वो वेरिएशन को शो कर रहा है, चेंज को शो कर रहा है. Now we will derive Lagrange's equation from Hamiltonian's principle. लास्ट लेक्चर के हमने की थी, हमने Lagrange इक्वेशन ड्राइव की थी D'Alembert प्रिंसिपल से. अब हम ड्राइव करेंगे Lagrange इक्वेशन को फ्रॉम Hamiltonian's principle. The action integral must be a stationary value for the actual path. Let us label each possible path in the configuration space by an infinitesimal parameter says A. So each path may be written as QTA equal to QIT0 plus AHI dot I belongs to 1, 2, 3 and so on, where H T1 equal to HT2 equal to 0, and from the above equation change in Qi is equal to NIT delta A. यहाँ पे वो कह रहा है, हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. अगर हम सबसे पहले देखें, एक वर्ड यूज हुआ है थर्ड लाइन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस? हमें पहले ये देखने की जरूरत है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके अंदर वो 3 डिमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास. तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी 3n होगी. और डिग्री ऑफ फ्रीडम में से अगर हम माइनस कर दें कॉन्सेंट्रेट्स को, तो हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स. और अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एन डिमेंशनल स्पेस के अंदर मौजूद होंगे तो हम उन्हें बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस. सो n dimensional space is known as a configuration space where each dimension represented by coordinates. As the generalized coordinates are not necessarily position coordinates, configuration space is not necessarily connected to the physical three-dimensional space, and the path of motion also does not necessarily resembles the path in space of actual particles. So यही चीज़ है कि n डिमेंशन होते हैं, इसके अंदर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें किसी बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आमतौर पर वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स नहीं होते स्पेसिफिकली. एंड इसी तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है, और जिसे हम n डिमेंशनल स्पेस का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं,
वो हमारे पास जो फिजिकल थ्री डिमेंशनल स्पेस होती है उसके साथ कनेक्टेड भी नहीं होता उसके साथ फिजिकली। सो कहते हैं कि अगर इस पार्टिकल के अंदर एक पार्टिकल मौजूद है, उसने आपको मूव करना है फ्रॉम पोजीशन वन टू अनदर, तो हम उसके लिए हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको QIT का नाम दिया गया। QIT 0 के ऐसा इसे हम दो सिस्टम में डिवाइड कर दिया। QIT 0 शो ये कर रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, प्लस AHIT, इसको हम पूरे को बोलते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टोनियन, the integral must have a station value for the actual path. Let us label each possible path in the configuration space by an infinitesimal parameter alpha. अब QIT सपोज किया कि इसके अंदर चेंज, कुछ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, और जो चेंज जो पैरामीटर्स हो रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर, वो चेंज वेरी 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 स्मॉल है, उसे हमने अल्फा से शो की है। अब QIT 0 मीन्स जो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, चेंजिंग किसके अंदर आ रही है, AHIT फंक्शन के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बट वो कहता है कि H1 और H2 के अंदर भी चेंज कोई नहीं हो रहा, वो भी इक्वल टू 0 आ रहा है। सो दैट इट्स मीन चेंजिंग किसके अंदर हो रही है, वो हमारे पास दो पैरामीटर है स्पेस के अंदर हमने कंसीडर किया है, उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो चेंज कोऑर्डिनेट्स का आएंगे हमारे पास, वो एन डेल्टा एक अल्फा के बराबर हमारे पास आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, the line integral should be equal to the integral having the limit t1 t2 L qi, the function of t alpha, and similarly the velocity coordinates also the integral t alpha and time t. Expanding the integral L by the Taylor series. अब टेलर सीरीज अप्लाई करके आपने जो लाइन इंटीग्रल आया उसको एक्सपेंड किया। यहाँ पे हमने एक चीज कंसीडर की है कि हमने जो टेलर सीरीज में हायर टर्म्स आती हैं उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज जो चेंज आ रहा है वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत स्मॉल आ रहा है। जब हायर इंटीग्रल टर्म्स लेते जाएंगे तो चेंज के आगे वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो हम उनको अप्रोचेस टू 0 हम कह सकते हैं। सो उन टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म्स ही कंसीडर किए हैं इसकी। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास हमने लैग्रांजियन का एक वो पाथ फैक्टर अलग कर लिया है जो कि स्टेशनरी है, और जो चेंजिंग आ रही है जिन जिन पैरामीटर्स के अंदर उनको हमने with respect to position coordinates and the velocity coordinates को हमने से सेपरेट कर लिया। So by taking partial derivative with alpha, we have equation number 4.19, multiplying by both sides with delta alpha. After multiplication we have partial L of partial alpha delta alpha equal to T1 T2 sigma partial L over partial Qi minus T by dt partial L over partial Qi dot
delta alpha NIT dt. Using equation number 4.14 previous equation, so जो चेंज इन हमारे पास आई आ रहा है हमारे पास आ रहा है which is equal to integral t1 t2 sigma partial L over partial qi minus d by dt partial L over partial qi dot delta qi t delta t. So जो डेल्टा आई है वो हमारे पास इक्वल टू होगा partial I over partial alpha into delta alpha, which is represented by the equation number 4.20. As we know that change in I is equal to 0, so the last equation will become, the left side of the last equation 4.20 will become to equal to 0, or after simplification we have equation this, which is the Lagrangian equation. बेसिक्स ऑफ द लैग्रांजियन इक्वेशन हमारे पास ड्राइव कर लिया हमने। नाउ अगर हम कोई स्पेशल केस को डील करें और हम सपोज कर लेते हैं कि हम पर जो एफ एक फंक्शन है, हमने पहले लैग्रांजियन फंक्शन लिया, अब हमने एफ फंक्शन लिया जो कि फंक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वाई वाई डॉट एंड एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वाई डॉट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. So after simplification, by using same step which we have done in the previously, the equation will become partial f for partial y minus d by dx partial f over partial y dot is equal to 0, which is a special case for general Euler-Lagrangian differential equation. So by this we can solve different examples. ये हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है लैग्रांजियन इक्वेशन को, हमने जो आपको 4.21 शो हो रही है वो जनरल लैग्रांजियन इक्वेशन है. अगर हम स्पेशल केस को डील करते हैं या हम कहते हैं कि यूलर लैग्रांजियन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, वो ये लास्ट इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा वहाँ पे. फंक्शन जो है आपके पास लैग्रांजियन है, यहाँ पे एफ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चेंजिंग आ सकती है. आप किसी भी फंक्शन कोई भी बनाकर आप इसमें पुट करके आप इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वहाँ पे आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए हैं और यहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल थी वाई और वाई डॉट, तो हम उस लिहाज से हमने इसको इक्वेशन को डिफाइन कर दिया. सो बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन सॉल्व डिफरेंट एग्जांपल्स here. If the force of the system are not conservative, if force is not conservative, वो ही मैं जो आपको बता के हटा था लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल भी की थी. कहता है फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है मींस अगर उसका डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 नहीं आ रहा. ये क्वेश्चन हमने की थी, मैंने कहा था आपने कंजर्वेटिव कैलकुलेट करनी है. डेल क्रॉस एफ इफ नॉट इक्वल टू 0 then we consider the force is conservative. And so if the force is not conservative then the Lagrangian equation will becomes, हमारे पास qi का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और l की जगह पे हम वहाँ पे t इंट्रोड्यूस हो जाता है. मीन्स जो फंक्शन है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है in that case, and qi is the generalized force. The Lagrangian equation for the non-harmonic system is, अगर हमारे पास नॉन हार्मोनिक सिस्टम हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो उसकी जो लैग्रांजियन इक्वेशन है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है फ्रॉम द
last equation where d by dt partial L over partial q j dot minus partial L over partial qi is equal to lambda 1 aij, where j is equal to 1 to so on 3 तक, where lambda are some undetermined equations known as Lagrange's multiplier. इनको हम Lagrange multipliers कहते हैं और ये undetermined equations होती हैं, हमारे पास quantities होती हैं जिसको हम define करेंगे later with some examples. Now we apply this Lagrangian equations to drive to simplify different problems in the daily life physics. So the first example is show that the shortest distance between 2 points is a straight line. कि दो आपने इसमें डिफाइन करना है कि दो आपके पास पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के अंदर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वो कहता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है which will be a straight line. अब इस चीज को हम जिसे हम in other words we can say that कि वो डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये चीज आपने प्रूव करनी है। अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और उस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट मौजूद है तो उस पॉइंट्स की जो पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम कह सकते हैं, अगर हमारे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर होगा, और बाय सिंप्लीफिकेशन वी हैव डी एस इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर इनटू अंडर रूट और वी कैन से 1/2 by taking dx common, so we have 1 plus dy by dx का whole square 1/2. The length of any curve between points 1 and 2 is given by, अगर दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, so which is ds का इंटीग्रल है पोजीशन t पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो आपने ds की वैल्यू पुट कर दी which will be equal to 1 plus dy by dx का whole का square का whole का under root into dx by taking now the shortest path can be defined using Euler-Lagrangian equation. कहते हैं कि हमारे पास जो shortest path है हम सपोज करते हैं कि Euler-Lagrangian equation का यूज करते हैं, हम इसे ड्राइव करते हैं। तो हमने कह दिया जो हमारे पास फंक्शन है वन पास जो इंटीग्रल के अंदर वाली फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ गया, वो फंक्शन आ गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो हमने लैग्रांजियन इक्वेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो हमारे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एंड वाई के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, तो हम वही फंक्शन यूज़ करेंगे जो एक्स एंड वाई के अंदर हमारे पास लैग्रांजियन इक्वेशन के अंदर अवेलेबल है। तो जो लैग्रांजियन इक्वेशन की फर्स्ट बेसिक जो जनरल इक्वेशन थी वो तो फोर थी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए। सो यहाँ पे वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई के अंदर अवेलेबल है, तो हम इसको हम डेली लाइफ के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। और so the function will becomes f1 plus dy by dx का whole का square under root, or we can say that dy by dx is equal to y dot square. So by taking the partial differential with respect to y we have 0, or by taking the partial derivative with respect to y dot we have y dot over 1 plus y dot square under root. By putting these values in the Lagrangian equation and after simplification we have d by dx y dot 1 plus y dot square under root equal to 0, or
y dot over 1 plus y dot square under root equal to constant. By scaling and simplification, we have y dot equal to 0, or we can say that a is equal to constant. By taking integration, we have y equal to ax plus b, where b is constant. And this represent the equation of straight line. कि हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि एक पाथ आपके पास पार्टिकल मौजूद है और उसका जो पाथ है ओरिजिन से उसका फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, और यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि क्या वो पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो लिहाजा आपने जो इक्वेशन ड्राइव कर ली है वो ड्राइव लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है। जब इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी आपके पास वो स्ट्रेट लाइन होगी। सो जब स्ट्रेट लाइन आपके पास होगी तो हम उसे ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है या ये जो पाथ है ये वापस क्या होगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। नाउ in this second example, we have using Lagrange's method of undetermined multipliers, find the equation of motion and force of constant in the case of a simple pendulum. एक तो चीज कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, जैसा कि हम एग्जांपल आज तक हम देखते आए हैं, हमने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हमने इस चीज़ को देखा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास mg, अगर हम उसको मूव करके सब एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर जाते हैं तो उसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, विच विल बी इक्वल टू mg, और वो जो अपनी मीन पोजीशन से पेंडुलम एंगल बना रहा होगा उसे हम थीटा कह देंगे। So this system has two coordinates where r and theta. R is the length of the pendulum, which consists of the length of the rope and the diameter of the pendulum, the radius of the pendulum. So by combining these two lengths we have L, or we can say that which is equal to R, and theta is the angle from the mean position of the pendulum. So according to this equation, examples, we have kinetic energy which will be equal to 1 over 2 mr square theta dot square, और जनरली हमें पता है काइनेटिक एनर्जी 1 over 2 m v के स्क्वायर के बराबर होती है, बट यहाँ पे जो v की वैल्यू है वो r थीटा डॉट है, तो जब हम v का स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास r का स्क्वायर थीटा डॉट के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। Taking the point of suspension as 0 for potential energy, so the potential energy will be equal to V is equal to minus mg r cos theta. तो हम ये हमारे पास L भी आ गया, T भी आ गया, हमारे पास V भी आ गया। by using these two equation we will define Lagrangian L is equal to E minus V के बराबर होता है, और तो लिहाजा आप T में से V को माइनस कर दें। लिहाजा इसको पहले फिर हम हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं R और थीटा, हम R के लिए अलग इक्वेशन ड्राइव करेंगे और थीटा के लिए अलग इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो when we using R, so firstly we will take the differential of partial differential of L with respect to R and R dot, and after that we will have for the theta coordinates we will
partial differentiate L with respect to theta and theta naught. After simplification and putting the values on the Lagrangian equation, differential form of the Lagrangian equation, we will get L theta double dot G plus G sin theta equal to 0. और अगर हम सपोज करें जो थीटा में बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. So we have L double dot plus G theta equal to 0. ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई by using Lagrangian equation of motion of a simple pendulum. एक पेंडुलम मूव कर रहा है और वो एंगल थीटा बना रहा है और जो पोजीशन है उसकी वो एल के जो लेंथ है उसकी एल के बराबर है. तो ये हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी. इसी को हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने आपको देखा था. जो थीटा डबल डॉट था सिंपल पेंडुलम में मोशन थी वो इक्वल टू माइनस जी थीटा ओवर एल के बराबर हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. तो ये उसी की दूसरी फॉर्म है जिसके अंदर हमने बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये दिस इज ऑल अबाउट द variation principle, and we have derived Lagrangian equation by using Hamiltonian principle. So well students, in the next lecture we will discuss some examples related with the Hamiltonian as well as with the Lagrange's equation by using D'Alembert principle, and you will see we will derive different equations of motion by using different systems such as Atwood machine, different types of pendulums, motion of a body on a plank, and similarly different functions we defined, and we apply the Lagrangian equations on these functions. Thank you so much.